afternoon, all of you. My name is Akanksha. बात नहीं करिए, बोलो तुम बोलो, तुम लोग मना करें. Standing with front of you to present on television violence on children. These days, whenever you turn on the television, the extreme form of violence, bloodshed, casualties, crime war, and things like that are shown on the TV. It may be through cinema, TV shows, or even news channels. Also, wars like Russia-Ukraine crisis, even in the cartoon channels, the central theme of the shows are like Hero, Avatar, One Man of Army type of thing also reflects some violence. When kids are subjected to watch these things, they develop a negative attitude, which leads them to enter in a world of crime, violence. There are many cases reported that see the technique or idea for doing the crime has been taken from film or TV shows. Sometimes these movies or TV shows motivate the person to do the crime. So you can think if a kid is watching these things whole day, what type of thinking he will be developing. When we were kids, we and we know how things affect in our mind. So limitation of watching these things are very important from my thinking. The parents should pay attention to what kids are watching. They can put kids on TV routine and limit their TV time. The television industry should also think and consider it that what they are making and what will be the effect on the society of their making. So overall, the conclusion from my side, parents must watch their children while watching TV and and put some restrictions on them. Okay. You want their feedback or mine? Want their feedback or mine feedback? Mine. Okay. First of all, a voice is very weak. Okay, आपकी voice में confidence नहीं दे रहा है. Doesn't it is not about the volume of your voice. It is about the way you speak. Okay, you have to be much more confidence. Okay, and आपका जो body language है, that is conveying submission. आप जिस तरह से खड़े हैं वही आपका जो है सबमिशन दिखा रहा है कि आप सबमिट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने. आप जब यहाँ ऑडियंस के सामने आते हैं, यू शुड बी कमांडिंग. आपका बॉडी लैंग्वेज कमांडिंग होना चाहिए, सो दैट दे शुड हैव समवन, they should feel like someone of authority is present there and they will like to listen to those things that you are trying to say. ठीक है, एंड जो भी पॉइंट्स बोले हैं उसको थोड़ा रुक कर थोड़ा पॉज लेकर बोलिए. ठीक है, कंटिन्यूअसली नहीं बोलना है, फुल स्टॉप है, पॉज लीजिए थोड़ा सा 1 सेकंड का. ठीक है, पैराग्राफ एंड हो रहा है तो पॉज लीजिए 2 सेकंड का. ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं रहना चाहिए, थोड़ा पॉज दीजिए, क्वेश्चन थ्रो कर दीजिए ऑडियंस के सामने, 2-3 सेकंड दीजिए उनको सोचने के लिए. ठीक है, यस. एनीबॉडी एल्स? यस, आपका यहाँ पर जो लिखा है आपने, ये क्या लिखा है? ये क्या है? Paying attention.
Okay. Created. यस, बाकी किसी स्टूडेंट को यहाँ प्रेजेंट करना है? आप लोग सबने प्रेजेंट कर दिया है? सबने प्रेजेंट कर दिया? किसने पे? आइडियल पे? आइडियल पे नहीं किया? उससे पहले भी एक और नहीं, उससे पहले वाला तो आपका फरवरी मंथ का होगा ना। टेलीविजन एंड वायलेंस जो है वो मार्च में आपका स्टार्ट हुआ है। यस, क्या रोल नंबर बच्चे आपका? 84 ना। क्या रोल नंबर? स्टेज पे इट माइट बी फरवरी वाला, मैंने नोट पैड में लिखा है। यस, आप लोग उधर से क्या बात कर रहे हैं? स्पीच नेक्स्ट आपका प्रिपेयर नहीं हुआ है? नहीं हुआ, डोंट वरी। यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे टॉपिक है दैट वी कैन हैव डिस्कशन हियर। यस, सो लास्ट क्लास सिंस यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी आई वुड लाइक फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू कंट्रीब्यूट व्हेन दे आर लिसनिंग टू मी व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू से। आज का टॉपिक जो है, हमने लास्ट क्लास डिस्कशन किया था अबाउट द एजुकेशन सेक्टर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फॉर मेल एंड फीमेल, राइट? तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट योर एजुकेशन। आपके एजुकेशन पे क्या क्या चीजें असर डालती है? जैसे आपको लगता है कि अगर मैंने ये कॉमन लाइन है जो मैंने स्टूडेंट्स के मुंह से सुनी है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। There are a lot of students who come to me and say that we don't have that kind of education that the other students or the ones that are higher level in the society people, they have that kind of education. We don't have that kind of education. So what do you think in your mind that affects your education? What are the factors that are affecting your education? पहले फैक्टर्स बता दीजिए, उसके बाद फिर फर्दर सेशन के लिए आई विल थ्रो अनदर क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग योर एजुकेशन? आपके एजुकेशन पे क्या क्या चीजें असर डालती हैं? अब मोबाइल सब अंदर रख लीजिए, अंदर रख लो सब मोबाइल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैमरा ऑन करके बोलिएगा। What are the basic factors that are affecting your education? See, I have a lot of questions, and even if I choose only one topic about education, I can give you the whole month, and my topic won't end. तो मेरे पास बहुत सारा topic है, बोलना आपको है. Now you decide whether which topic you will be speaking about, because once the easier topics are going completed, yes. इसको प्रैक्टिस करो पहले। नहीं, मैंने जो चेंजेस किए हैं उनको उनके साथ आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से एक दिन पूरा, नेक्स्ट क्लास में आप दे सकते हैं। यस, वहां जाके बोलना है, क्या बोलना है, क्या प्रेजेंट करना है? नहीं, टेलीविजन वायलेंस सब खत्म हो गया। ऑलराइट, जस्ट गो देयर, जाइए। मोटिवेट कर रहे थे। Good afternoon to all of you. My name is Akanksha. I am here to deliver a speech, television violence and children. For the today's generation, television is a smart source of entertainment and knowledge, which gives information about what's going on today in generation. There is a lot of merit of television and as well as demerit. Also, television has the power of changing
mindset of people. Nowadays, television violence has created a adverse impact on the children. Many children have spent their maximum time in front of television. The things they watch on TV are being influenced by them. Yes, do you want their review? नहीं रिव्यू उनका चाहिए या नहीं वॉइस आपकी वॉइस में पावर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, आपकी वॉइस स्ट्रांग है, लाउड है, बट दिस डजंट मीन कि आप कन्वे कर रहे हैं अपना स्ट्रेंथ यहाँ पर। प्लस आप यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपका माइंड जो है वो यहाँ आपका माइंड ठीक है। तो यू हैव टू बी व्हेन यू प्रेजेंट अ स्पीच, व्हाई डू यू प्रेजेंट अ स्पीच? क्यों स्पीच देते हो? मैम बोल देती है इसीलिए। तो क्या रीजन होता है स्पीच देने का? स्पीच जब कोई देता है तो उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है दैट दे वांट टू प्रेजेंट देयर ओन ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ देयर ऑडियंस, राइट? आपने कभी सुना है कि हर जगह कोई स्पीच दे रहा है तो नए टॉपिक पे ही दे रहा है? कोई ऐसा टॉपिक जो दुनिया में कहीं डिस्कस नहीं हो रहा है? नहीं ना, हर जगह डिस्कशन हो रहा है, उस टॉपिक पे दिया जाता है, राइट? आपने जो यहाँ पर जो दैट पर्सन जिन्होंने यहाँ पर कहा था अबाउट द यूक्रेन वॉर, ठीक है, द यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन वॉर हाउ मेनी टाइम्स? अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो ये जो टॉपिक है, दैट इज दीज टॉपिक्स आर कॉल्ड हॉट टॉपिक्स दैट आर गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द पीपल आर लिसनिंग टू दिस, राइट? तो इसी वजह से ये टॉपिक्स चूज किए जाते हैं। तो आपको अपना ओपिनियन बताना है, तो जब आप अपना ओपिनियन असर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कॉन्फिडेंस से नहीं बोलेंगे, वो लोग नहीं सुनेंगे, वो हंसते ही रहेंगे, ठीक है? तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए और अपना ओपिनियन लिखिए, गूगल का नहीं। बैठिए। नहीं, अब स्पीच आप नहीं लिखेंगे। यस, एनीबडी एल्स? अगर कोई और यहाँ पर प्रेजेंट नहीं करेगा तो आई हैव गिवन यू द टॉपिक फॉर द डिस्कशन ऑफ टुडे। How sure are you that you can present it? You sure? Morning to all of you. I am Manish Kumar and standing in front of you. Enquiry speech my passion. Passion means what? Passion means a strong feeling and great enthusiasm with what you are interested in. Then actually at the teenager, my passion is going to become an engineer, doctor, and after while changing their time day to day. And few months you will also I have a passion about something doctors, engineer. After a month, after a year, something interested other apart from that, and you are going to suit to the another person. That's why you don't care about any your passion or interested in any else here. You are not successful, but you only successful by paying attention, willing to pay. And after that, one of the I have to take an example about sitting computer. One of the interviewer asked there after completed 20th century sitting computer asked how did you do that at 20th century in a few year to 2 years. But sitting computer said that then I was at the teenager.
I always practice and every time 24/7 work as a play, as a eat, I work and I also imagine how to play and how to work. That's why Sachin Tendulkar play and completed 20 centuries. And that's all. Thank you. Do you want their review? आपका वॉइस स्ट्रॉन्ग है, कमांडिंग है, there is strength in your voice, but there is a little bit weakness in your pronunciation. थोड़ा सा pronunciation आपका कमजोर है. ग्रामर के लिए तो मैं यहाँ पर सही कर दूंगी. एंड थोड़ा सा आपका enthusiasm जो है उसको और बढ़ाइए. ठीक है, कमांडिंग है, आपका एक्सप्रेशन आता है, that is well and good. थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा. एंड the flow that comes while you are continuously saying something, वो flow लाना. ठीक है, हाँ, कंटिन्यूसली नॉट इन द सेंस कि लगातार बोलते रहना, मतलब वो फ्लो रहना चाहिए. ठीक है, ब्रेक जो हो रहा है अभी हर एक वर्ड पे, वो ब्रेकेज नहीं होना चाहिए हर एक वर्ड पे. एटलीस्ट एक सेंटेंस आप एक पूरा फ्लो में बोलेंगे. ठीक है, यस, एनीबॉडी एल्स? और किसी को स्पीच देना है? नहीं देना. चलिए, तो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू द टॉपिक फॉर द डिस्कशन. दिखा देते Yes, does anybody else want to go out of the class? ऑनलाइन में बाहर निकाल सकते हैं क्लास में, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं निकाल सकते हैं. यस, तो अनम्यूट नहीं करेंगे बिना मतलब का. यस, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू द टॉपिक. टॉपिक याद है कि? यस बच्चे बोलिए. बच्चे Good afternoon, everyone. My name is Riddhi Kumari. Our topic, my name is television violence and children. This day, just about every time you turn on the TV, you are must with a beam of violent image, including explosions, being and where and that just the news may popular television shows. Every those in the so called family time sort of also future must more violent than shows art in this time sort just a few years ago. Thank you, ma'am. All right. Yes, anybody else? Yes, what was the topic for the discussion? Yes. हाँ, तो क्या फैक्टर्स हैं? Okay. Mindset of one student, family problem, parental issues. Yes. और क्या? Financial expectation and what is family problem? How do you define your family problem? And some of the family members decided not send to the other cities, and some of the family members and other family members said they need only here. But as a student, the student point of view, a student said that from here it affects lots of factors from here where I am staying from home, and I read it's very mind disturbing from our family. And in other part, apart from that, in other cities, a student
have only conscious about the study, Hmm. and that was the factor affecting the students. Okay. Yes. सेम चीज था तो आप भी बोल दीजिए. What exactly do you mean family problem? Family problem तो बहुत सारी होती है. Family can be a lot of some medical issues, some financial issues. All that include, yes, all that includes your family problem. But exactly what differentiate those factors? Like जैसे इन्होंने कहा कि some people who think that they are not allowing their children to go outside. ठीक है, वो कोई allow नहीं करते हैं, especially the female child. ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया. और फाइनेंशियल इशू भी तो एक फैक्टर हो गया. और नहीं, वहां डिस्कशन नहीं करना है, बोलना है यहाँ बोलिए. Let me know what you feel the factors are responsible for your studies. Yes. Don't decide to send out only to get education because family members think that they are not well education. And apart from that, a student have got achievement and they also inspire from the other in every is ever decided I can do it. I think. And then family members not going to say okay. So the fact, these are the factors that also the student. Okay. So basically, if we like distinguish these factors, one of the factors that you said was financial problem. One of the parts that you said is about the thinking of your relatives, and any other factor that you'd like to influence. क्या इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो आपके एजुकेशन को इफेक्ट करता है? तो जब इतना सारा चीज है तो why are you keeping quiet? Another factor is by area wise, the student very much so restricted area, and there the student also affect from learning results. Okay, area evaluation or area cities. Transportation. How? What does it mean? कोई साधन नहीं है. Okay, no resources available in this area. Okay. Anything else? In what? No, that is the truth. Like even if your parents are allowing you to go outside, there are a lot of distraction in that. Nobody is there to monitor your studies. Like when you're at home, your parents might monitor your studies. Like at least 2 hours, they might like pamper you and all. But after that, they will be like, "Ab pad lo, 2 घंटे हो गए, आराम कर लिए, कॉलेज से आकर अब पढ़ लो," right? But when you are outside, when you're living in a hostel, there is no one to monitor that. Even if they are asking in on phone call, you can lie just to them. Or or क्या distract? There are different levels of distractions also. Can you define that level of distractions? Friendship, okay. If you are friends with the wrong person, they might not be able to support you in the studies. Rather, they'll distract you with different activities. Anything else? Acha, tell me one thing. You say that friendship is one of the distraction. If you are friend with if you're friend with a bad person that is affecting your education, that is not supporting you while you're doing homeworks and all, why is you not influencing that bad person into getting the homework done? Why, like if a good student is a friend with a bad student, why can the influence be flowed by the other way around? Bad influence. Yes, that's what I'm trying to
analyze it from your point of view. What do you think? Like, if you are with a good person and you are the bad influence, why can you become the good person rather than you letting them become the bad person? जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते. Okay. तो फ्रेंडशिप टूट जाएगा तो फ्रेंडशिप तो आपको अच्छे करने में भी टूट सकता है. See, one of the reasons that is actually psychologically true, that bad activities attract more attention rather than the good activities, because good activities need habits. Once you you have to have at least 30 days. You have to give any good habit to be adapted into your life, and 30 days are too much for not a good student to like devote that time to a good activity. Anything else? Acha, let me say this. If you say there are no resources in that particular area where you are saying that there are no like education institutes are not there, proper teachers are not there, proper transportations are not there, what can you do for that? What solutions can be founded for those things? How? To whom? To the student? कैसे हुआ? Okay. So you think that can be implemented from the other areas and it will be as such effective as it is there? Acha, online classes must be promoted, but the thing is there are a lot of students who are saying that online classes mein man nahi lagta padhne ka. Unka kya kiya jaye? Like, you can send the teachers to have a training. Even if you don't send them, the person who is trained, they can teach within more than like it won't take more than 1 week for the teachers to learn how to handle the online classes with every tools that are available on the Zoom app or with any other app that is they are taking classes on. But what would you do to those students? Because ऐसे events आपको भी पता है हुए हैं, सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं, आपको पता है हर एक कॉलेज में हुआ है. Even in the USA, there are some students who are not the teachers who are not able to handle the students because they are hacking the systems themselves. ठीक है, ये तो बहुत high level हो गया. And once a student is said to open the camera and they're dancing in front of the camera rather than answering the questions that the teachers are asking. And when they are asked to unmute themselves, they are traveling in the train and they are logged in the classes. Then how are you able to handle those things? Because those are the major factors for your education. If you wanted to get education, that doesn't mean that you have to attend the class during traveling while you're in train. ठीक है, वो चीज नहीं आपको यहाँ पर इसलिए नहीं प्रोवाइड किया गया था ऑनलाइन क्लासेस कि आप कहीं भी सड़क चलते ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लें एंड उसके बाद बस कान में लगा के अटेंडेंस बनवा लें. ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस चीज का? As a student perspective, what you can say about this? How can you get them to cooperate? That's what the thing now. So that is the reality. People like they just log in, especially from the morning classes, 8 to 9, 9 to 10 classes. They usually just they usually just log in and just go to sleep again. Because you are students, okay, and your perspective is what should we do to those kind of students, or what should we do to help those kind of students, because they are the one responsible for their careers and they are destroying their own career.
How you are going to set the example, बच्चे? Yes, strict action again those students. ठीक है, चलिए हमने strict action ले लिए, उसके बाद भी हो रहा है तो ओके मतलब हम अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो हमें सबके सामने लेना है ताकि सबको पता चले that these things have been taken care of while these things have been. चलिए ठीक है, हम बच्चे को सस्पेंड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गलत हरकत की तो एक्सपेल कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो सिंसियरली हर एक क्लास कर रहे हैं लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्योंकि उनके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क में इश्यूज आ रहा है. व्हाट कैन वी डू फॉर दैट? बिकॉज if you want to go online, that means you should have each and every place should have a proper network issues. कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए. तो नेटवर्क के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप BBM स्टूडेंट्स है, you are marketing students, you should know that these kind of problem will arise. Pros and cons हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि cons हैं तो उसके लिए आप कुछ करेंगे नहीं. सारे सॉल्व नहीं हो सकते, बट नेटवर्क इश्यूज कैन बी सॉल्व. You can change the operator, service operator. Okay. Acha, let me get this one. Since you are management students, let me share a real life example. Someone who has made, किसी ने तो बनाया होगा Zoom classes, right? Zoom meeting, उन्होंने ये mind of view तो नहीं रखा होगा उस time कि उन्हें online classes करनी पड़ेंगी, right? Their mindset was to set a meeting between those working people who are working from here and the main office is in some other place like Japan and USA. That kind of base city was not here. तो उनका जो मोटिव था, अब they have to cover both the grounds. Right now they have to cover both the grounds. To the people who are working, उनके लिए भी उनको grounds cover करने हैं, rules बनाने हैं, setup करना है, updates करना है. And जो students Zoom classes से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उनको updates करना है. Can you think of some updates that can be done in the Zoom classes that will be helpful for both the working class people and the students and teachers? कोई ऐसा अपडेट जो यहाँ पर आपके लिए as a person who is attending a meeting with their managers उनके लिए भी अच्छा हो, और plus if you are attending an online classes उनके लिए भी अच्छा हो. You don't have to create that person, just tell me as such of your own experience. आप लोगों ने सबने experience किया है Zoom classes, so tell me is there something that you can think of that could be developed in the Zoom classes so that it would be much easier to be usable as a student, as a teacher, as a person who is holding a meeting with their managers and all. दोनों ही prospect, क्योंकि उनको दोनों ही customers तो उनके सारे ये हैं, right? जो working people हैं वो भी और जो classes ले रहे हैं वो भी. तो how can a single yes, क्या ऐसी changes लाने चाहिए जो कि betterment के लिए होंगी? जैसे आप switch करें तो okay, that can be a good thing, but that can be also a bad thing if you are sharing the screen. अगर नहीं स्क्रीन शेयर करने के लिए बैकग्राउंड में आपका स्क्रीन ओपन होना चाहिए. तो मान लीजिए आपने क्विज पोल का ऑप्शन है, बट ओनली द होस्ट कैन डू दैट. पोल करके क्या करोगे? पोल तब होता ना व्हेन आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन यस और नो. अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन करती और मेरे पास हाँ बिल्कुल, we can create it. It can be created because it is not that kind of classes here, right? We have to handle both the things. तो उसके लिए हम लोग unmute कर देते हैं बच्चों को. They can say yes or no, or they can raise their hand. If we want, we can create, but it is a tedious task. ठीक है, it is a tedious task. If we want such kind of material, if we have that kind of
टेक्निकल सपोर्ट वी कैन डू दैट, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका उस तरह का अगर जैसे मेरा सब्जेक्ट जो है, मेरा लिटरेचर का जो सब्जेक्ट होता है, समटाइम्स आई डू दैट पोल्स, ठीक है, समटाइम्स एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेशन और 2 सेशन आई डिड दैट, बट आई डिडंट गेट एज सच रिस्पॉन्स, सो आई जस्ट स्टॉप दैट बिकॉज मुझे वो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। एंड बाकी के जो मेरे कम्युनिकेटिव क्लासेस हैं वो एड-ऑन्स हैं, तो आई वांट पीपल टू स्पीक अप, नॉट टू पोल ओनली, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट ऐसा है दैट आई वांट यू टू स्पीक मोर एंड नॉट पोल और यस और नो, राइट। अगर आपका मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट है देन दोस टीचर्स कैन डू दैट। मेरा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है ना कि मैं आपसे चुपचाप रह के बस यस और नो करवाऊं, मुझे आपको जबरदस्ती बोलने के लिए मजबूर करना है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग पेड फॉर बेसिकली। सो आई डोंट हैव एज सच लाइक रिक्वायरमेंट टू डू पोल्स, अगर होगा देन वी कैन। ओके okay, that can be implemented, they can use more polls. And anything else? और क्या डेवलपमेंट हो सकता है that would be easier to use the Zoom application? अटेंडेंस का मुझे पता नहीं है, कोई अटेंडेंस जैसे आप लोग लेते हैं खुद पे खुद बन जाए, खुद पे खुद बनता है, बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो जैसे जैसे लॉगिन करते जाएंगे वैसे वैसे इनका नाम उस लिस्ट में ऐड ऑन होते जाएगा। एंड नहीं, लीव हो जाएगा तो भी रहेगा नाम, लेकिन अगर वो लीव करके रीज्वाइन कर रहा है तो वो फिर से नाम शो करेगा। इसका मतलब अगर कोई बच्चे का नेटवर्क इशू है, वो 4 बार ज्वाइन कर रहा है तो उसका 4 बार नाम आएगा, एंड दैट इज द इशू। तो वो उसमें बहुत टीडियस टास्क हो जाता है। एंड प्लस अगर वो लिस्ट रह गया बनाने के लिए तो वे फिर 1 हफ्ते बाद फिर हमें टाइम मिलता है, संडे को बैठ के बनाना पड़ता है, एंड दैट इज द रीजन वी डू इट इन द क्लासरूम। वो लिस्ट जो होता है ना, मैं एक भी लड़की नहीं आई है क्लास में, बंद करो, ये देखना था इसको। Nisha. All right. So as I was saying, like if I share my own experience, BCA PPU and BCA AQ, I take both the classes. ठीक है. BCA PPU में I teach literature and BCA AQ में I teach communication. And BCA AQ में इतना attendance है that if the people are continuously joining, one day the attendance went on that list 500 because they were continuously rejoining, and the regular attendance is 300. उनका actual attendance है, तो it is very tedious task if I do it like अगर किसी other time में free time करना चाहूँ तो वो बहुत ज़्यादा it will at least take 1 hour for me to do that. हाँ, system develop हो सकता है, like if we have that resources or knowledge to convert it into roll number wise और batch wise, अगर हम इसको differentiate कर पाए, अगर हमें सिखाया जाए इस तरह कि हम इसे batch wise अलग कर दें, फिर रोल नंबर वाइज ट्रांसफर कर दे, फिर जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट ना हो, अगर वैसा सिस्टम रहे तो ये बहुत आसान होगा. वी कैन जस्ट मूव द शिफ्ट एंड जस्ट कीप इट इन वन विंडोज एंड वी कैन ओपन द अटेंडेंस शीट इन द नेक्स्ट विंडो. तो वो चीज तो है, बट वो हम सिर्फ रेफर करने के लिए यूज करते हैं जो जो बच्चे लॉग इन किए हैं, एंड ये देखने के लिए कि कितने देर तक वो लॉग इन रहे हैं. तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इसमें भी प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम्स व्हेन पीपल आर मिसबिहेविंग, तो एडमिन वाले जो आईडीज होते हैं, दे कैन नॉट शो द आईडीज ऑफ दोज पीपल हु आर मिसबिहेविंग. वो सिर्फ नाम दिखाता है, डिस्प्ले नेम, एंड डिस्प्ले नेम कैन बी चेंज बाय द स्टूडेंट. हाँ, तो दैट इज नॉट सच एज सच वी कैन नॉट टेक द एक्शंस. उसमें भी ये एड ऑन किया जा सकता है दैट द एडमिन आईडी शुड बी अलाउड टू सी द आईडी, कॉलेज आईडी जो है आपका. और कोई चेंजेस दैट यू थिंक? अच्छा, ये तो एज अ स्टूडेंट हो गया. एज अ लाइक इफ यू आर अ मैनेजर एंड इफ यू वांट टू हैव अ मीटिंग विद लेट्स से 15% बहुत ज्यादा होते हैं मीटिंग के लिए, पहले ही बता दे रही हूँ. आप जब काम करने जाएंगे आपके लिए मोस्ट अटेंडेंस जो रहेगा मीटिंग का, अगर वेबिनार सेमिनार हो रहा है देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट रेगुलर मीटिंग्स जो होंगे आपका मैक्स टू मैक्स 5 पीपल, 10 पीपल, 15 पीपल, 20 पीपल, उससे ज्यादा का नहीं होगा मीटिंग आपका. तो अगर आप 15 लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो क्या ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या क्या सोल्यूशन निकल सकता है जिससे वो एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर रहे आपके लिए?
हर आदमी कम्युनिकेट करे, दैट इज इंडिविजुअल इफ दे वांट टू कम्युनिकेट. अच्छा, what are there are some privileges of being a host and co-host. तो वो privileges क्या, मुझे बताइए कि आपको बाकी सारे candidates को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? सबको देने चाहिए, ठीक है, and नहीं देने चाहिए. Okay, 2 are saying yes and 2 are saying no. Why? Okay. नहीं, वो तो obviously they are allowed to speak. Like being a host, I have the right that I can mute you all at once, right? हाँ. Okay, so even you are agreed that there are some people who should not be given the responsibilities. चलिए, ठीक है. Okay, and let's say if I want to share a file, what kind of files can I share? Like how to screen out the files that are knowledgeable, and like say अगर मैं कोई website share कर रही हूँ, ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करने में कई बार ऐसा होता है, if I'm directly using a Google website, it creates a problem because sometimes ad shows that. So if I want to remove that, will it be helpful that if the Zoom app allows me to cut the screen of the proper image that the screen that I want to display? Like मान लीजिए मेरा पैराग्राफ इतना ही है, ठीक है, और उसमें स्क्रीन तो वो पूरा इतना दिखेगा डेस्कटॉप पे, तो वो बाकी का जो ऐड है अगर मैं काट दूं तो वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? नहीं, जूम में व्हेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, तो मेरा जो स्क्रीन जो गूगल का खुलता है वो पूरा गूगल का वो स्क्रीन खुलेगा. So if those kind of ads are being displayed, so if I can just crop it, then wouldn't it be much better? Okay. Anything else that you can think of? Asha, being a student, how much have you used the Zoom app? कितना आपने यूज किया है Zoom app और कितना एक्सप्लोर किया है Zoom app को? 5 to 6 months. Okay. 3 years. Okay. Have you explored the whole app? What all options you have been provided? Yes. What are the options that you think that you could use, are useful to you? नहीं, those are the things that you can use. What are useful to you? मतलब कौन आपके काम की चीजें हैं, कौन से टूल्स आपके काम की हैं? बैकग्राउंड, ओके. चैट, ओके. प्रोफाइल पिक्चर कोई काम की नहीं है तुम्हारी. Okay, you can be on your video and switch your videos on, and audio video. Yes, okay. Anything else? नहीं, बस उतना ही एक्सपीरियंस है आपका Zoom ऐप के साथ. अच्छा, if you can save the क्या बच्चे, आपको क्या है, बार बार क्यों यहाँ पर आपका नाम बार बार यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है? ये क्या तरीका है क्लास करने का? नहीं करना है क्लास, मत करिए. हाँ वही है 34, सॉरी 64. सस्पेंड करवा दूंगी मैं तुम लोग को, ठीक है ना? ये जो हरकत बार बार आप लोग कर रहे हो ना, such a disturbing elements, like they don't even have the discipline to attend the classes. हजार बार इनको कहा है, and these are not the only ones who are doing this. हर किसी का यहाँ पर मैंने देखा है, आप जब ऑनलाइन क्लासेस जाएंगे, किसी के कोई सड़क, इसीलिए मैं कह रही हूँ, कोई सड़क चलते ऑनलाइन चला गया है क्लासेस, कोई ट्रेन पे बैठा हुआ है क्लासेस कर रहा है,
Like, why do you attend the classes? I don't understand. क्यों attend कर क्यों रहे हो? क्या फायदा होगा? Attendance क्या फायदा? Exactly, that was what I'm telling कि तुम लोग अगर online classes कर रहे हो, Zoom app is not utilizing, you are not utilizing as such the Zoom app as you should be utilizing. Zoom app आपके लिए है ताकि आप घर बैठे बैठे काम यहाँ पर अटेंड कर सके, क्लासेस पढ़ाई कर सके, इसलिए नहीं कि आप सड़क चलते कहीं भी बस अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद अटेंडेंस लगवा दे रहे हैं. Excuse me, ma'am, it's me, 64. 64 आपका रोल नंबर है. Then why Yes, is ma'am. display saying 64? No, ma'am, it was not me. I'm in the room. Okay. नहीं, she might have changed the display name और क्या. नहीं, this is not the kind of behavior that is tolerated. And यही सारी चीजें होती हैं, यही एक दो बच्चों की वजह से आपका ऑनलाइन क्लासेस जो होता है बिल्कुल ही बर्बाद हो गया. Like I am telling you, when I first joined, I had a lot of great experiences, but there was only one class I was very frustrated with, and the only problem was sometime in between the class someone used to play music. And 2 बार ऐसा हुआ, तीसरी बार I suspended that boy, and at least for 3 months that didn't repeat it. And that repetition was happening when it was online classes purely in between January to February. और ये सिर्फ मेरे नहीं, उस दिन सभी के क्लास में उस लड़के ने किया. Again he was suspended. And ये repetition क्यों हो रहा है? That means because they have that courage. वो जो online आ जाने से आपका जो अलग से courage हो जाता है ना, किसी को भी judge करने लगते हो, जो Facebook पे comment करने की हिम्मत आ जाती है, वही हिम्मत आ गई है ऑनलाइन क्लासेस में करने की, उनको कुछ भी कर रहे हैं. That is why I asked how to discipline these students. आप कैसे कह सकते हो कि that teacher are wrong because they are behaving like that kind of people? नहीं, वही तो मैंने कहा, twice that same person is suspended twice for the same thing, and that same person is repeatedly saying here that it was not his ID, when it was clearly shown in the display name with his college ID that this particular person has done this thing. Parents meeting तो करानी चाहिए. I want this to happen. Even after the internals, I have been informed that parents teacher meeting होगी, but नहीं. Which exam? Answer sheet. If you have a problem with the numbers, internal का marks आपको नहीं पता है? It was displayed in your group. It was sent in your group. Which internals? That was happened in December, no? Yes, it was sent in your group. And that is a different thing because I have uploaded and in my batches it was shown. So you could have asked the specific teachers. हाँ, उसमें तो रहेगा ही, obviously रहेगा, दिखा दिया जाएगा. नहीं, वो तो नहीं, PGM यहाँ होता है, don't worry. वो online classes चल रही थी, that's why, because of that kind of gathering we don't want to have because of COVID. Acha, tell me one thing. How from 1 to 100%, okay, can you rate your experience as Zoom classes? How much it was helpful for you? 60-40, 1%, stick to 1%. 85%. In what way? Like learning or just attending? Learning, okay. 30%. Okay. 80. Okay. Ma'am, excuse me. Yes, Ma'am.
Yes, you can speak, Bachchan. Yes, sir. Having specific subject, IT. नहीं, बेसिक नॉलेज यू शुड हैव, वो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आप मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, आगे जाके आपको मैनेजर ही बनना है। तो बीइंग अ मैनेजर, इफ यू नो मच मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर योर एम्प्लॉइज। आपके अंडर जो काम कर रहे हैं ना, आप उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर IT का कोई पर्सन है जो आपके अंडर काम कर रहा है, बीइंग अ मैनेजर इट इज योर वर्क टू मैनेज दैट पर्सन ऑल्सो। उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका प्रॉब्लम वो आपसे पूछने आया है बिकॉज ही थिंक्स दैट यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। अब आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अगर पता है तो कम से कम आपको ये पता रहेगा कि कौन सा पर्सन आपको हेल्प कर सकता है, आप उसे रिवर्ट बैक कर सकते हैं उस पर्सन की तरफ। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आप देखिए मैनेजमेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी नॉलेज को आप एक्सट्रैक्ट कर ले, आपके लिए हमेशा काम रहेगा। रिमेंबर दैट। आपके लिए मार्केट में क्या चीज कब काम आ जाए, बिकॉज IT सेक्टर इज कंटिन्यूअसली डेवलपिंग एंड इट विल गेट डेवलप्ड। ठीक है, वो हमेशा डेवलप होता ही रहेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आती ही रहेंगी। सो दैट इज द मेन फील्ड दैट यू वांट टू बी लुकिंग फॉर। ठीक है, अब मैं नहीं कोडिंग पे ही चले जाओ, लेकिन मैनेजर्स भी तो चाहिए, है ना। आप जो कोडिंग कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो एप्स बना रहे हैं, उनको सेल करने के लिए सेल्समैन चाहिए, राइट। उनको प्रोडक्ट जो है उसका एडवर्टाइज करने के लिए क्या चाहिए, मार्केटिंग टीम चाहिए ना। यू आर देयर, यू आर ऑलवेज बी रिक्वायर्ड देयर। तो यू हैव टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपके लायक नहीं है। ठीक है, इवन इफ यू थिंक बायोलॉजी इज नॉट फॉर यू, लेट मी टेल यू इट इज फॉर यू। बिकॉज अगर फ्यूचर में कोई ऐसा डेवलपमेंट आता है दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ, वो भी तो मार्केटिंग आप ही को करनी है। तो थोड़ा नॉलेज, बेसिक नॉलेज इन सबको बांट दीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स end this session here then. Next class और discussion